निष्पत्ति गोटे कथा तो स्पष्ट होचे सरकार विस्तृत भाव में आप आलोचना करछंती जे जोगुड़िक साधारण लोकों दरकार जोगुड़िक साधारण लोकों दरकार प्रत्येक दिन दरकार ता उपरे आमे कर बसैबुनी केवल बसो ता उपरे अधिका कर जोड़ा 40% कथा आप कहते लग्जरी प्रोडक्ट्स शौखीन जो गुड़िक किणा जाउछि जो माने अफोर्ड करि पारछंती किनि पारछंती एवं मादक द्रव्य हाँ आमर जेहेतु देखाई जेहेतु से जिते जो टैक्स रिफॉर्म करने द्वारा हिसाब कर देखाई ऑलमोस्ट 96,000 करोड़ आमर सरकार हरौं रेवेन्यू सेटा हरौं माने सेटा लोक मान पाखक जाउछि एवं सेही 96,000 करोड़टा लोक मानकर पैसा लोक मान पाखे रहिबो एवं लोक माने सेटा खर्च करिवे एवं खर्च करबा द्वारा हम अर्थनैतिक प्रगति हेबो तेणु जो शौखीन आइटम बा जोटा हम कहते मादक द्रव्य जोटा कहते जेहेतु सरकार से द्रव्यटा को कंट्रोल करने को चाहती और बेसी केमती स्प्रेड न हो कंजम्पशन चाहती तेणु तापर 40% लगे एवं जो शौखीन कार जोटा अच्छी आम कार नि अनेक गुड़े शौखीन आइटम अच्छी जोटा कॉस्टली आइटम कहुए और से आइटम 40% नहीं तो सरकार जो लॉसटा होची जे दुईटा उपाय से लॉसटा को से भरणा कर गोटे हूँ 40% टैक्स किसी पाइबे एवं द्वितीय से माने जेहेतु चाहिदाटा बढ़ो कहीं आम जिते चाहिदाटा जो रेटा कमिज अनेक गुड़े जिनसर जो रेटा कमिज चाहिदा बढ़ो लोक मैंने अधिका कंजम्पशन करेंगे केते गुड़े आइटम कंजम्पशन करेंगे धर जो पेस्ट आपंकर रेट कमिगले आप अधिका पेस्ट घसबे ना जी पेस्ट घसिया कथा घसबे तेणु से दृष्टि आप देखिए अनेक गुड़े आइटम खाद्य पदार्थ आइटम गोटे अच्छी जोटा कि मिडिल क्लास आक्सेस करें आपंकर होटेल खाद्य गुड़ा को जेहेतु 18% टैक्स रेट टी बढ़ी जाता तेणु ता रेट जब कमिगला जोटा होटेल रुटी जोटा धर 5% आपंकर परोटाटा तेणु से आप लोक मैंने अधिका खाईपारे तेणु मो तो जो देखा आमर मध्यवित्त को सुहाइला भाया टैक्स रेटा अच्छी किंतु एबे देखा जीवो जे को आइटम रे एग्जैक्टली केते परसेंट टैक्स चुक्त मिश्र मु आपन पाखु फेरुची टिके सहयोग करंतु हम पुणी आपन पाखु आसछु प्रसन्नजीत मोर सहयोगी आम सहित पूर्ण प्रस्तुत हो गले एवं टीम लगातार भाव में काम करुच्ची दर्शक बंधु आपन पाखरे केमती पूरा तथ्य बड़ स्पष्टतार सहित रखा पाई कारण ये मो जीवन को प्रभावित करिवो ये आपण जीवन को प्रभावित करिवो आपण जितेबाला 22 तारीख पर मार्केट को जिबे ब्रेड किनिबा पाई मिल्क किनिबा पाई आपण को कम टंका दवा पाई पड़िवो आपण कम खर्च करने पड़ो दर्शक बंधु एवं केमिति करने पड़ो जदि आप लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस नहीं केमती आपंकर 18% GST जहाँ आप दौले एवं शून्य देवे एवं केमती प्रभावित कर बुझेबे आप प्रसन्नजीत आम सहित जोड़ी है प्रसन्नजीत नील 5% केमती 12% और 18% रिडक्शन है 5% को आसी महंगा कौन होची टिके दर्शकों को भी बुझातु एवं स्पष्टतार सहित रखंतु जे 22 तारीख पर जीवन में गोटे बड़ परिवर्तन केमती आसापी जाऊँगी आम दर्शक बंधुंकर आपणकर भी आ मोर भी देखो सुनंदन जो जीएसटी को लेकिन जो टैक्स को लेकिन जो कर को लेकिन अनेक चर्चा हुए जे कर उपर कर सरकार लदे चली साधारण मनुष्यटी केमती बंचब ये बोधे बड़ रिलीफ कहीपर जो कहती ना रूट टू फ्रूट लेवल जाए सबकि परिवर्तन होती बुझापी देखो स्पष्ट भाव ये बुझेबी चाषीटे बंचिले चाषटे बंचिले आम पाखे जो दानाटे आसूची सरकार उठिले आप जो रुटीटे खाऊँ भातटे यही जो निष्पत्ति रे परिवर्तन हम एवं ये निष्पत्ति द्वारा आम जीवन में परिवर्तन आसो कौन कौन देखो ट्रैक्टर रे जो 12% पड़ूला जीएसटी सीधा सड़क 5% आसीज ट्रैक्टर टायर पार्ट से जो गुड़िक 12% 18% पड़ूला ताहा भी 5% आसीज डीप इरिगेशन जो गभीर खनन होता से व्यवहृत होता जो मोटर पंप ठू आरंभ कर स्प्रिंकलर ठू आरंभ कर तार जाई सबकि जो 12% थिला ताहा भी 5% को आसीज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर संपर्कित जंगल जातीय जेगुड़िक रहा चाष जमी जातीय जेगुड़िक रहा जहाँकि चाष उपयोगी होता है एवं आमर वन्य प्राणी संपद सहित जड़ित थिबा प्रत्येकटी वस्तु जहाँकि 12% और 18% थिला ता सीधा सड़क 5% आसो सुनंदन खाली भावंतु जे 12% रु 5% ये गैप ये जो डिस्टा रोचे 7 रु 8% और 13% सेपटे जो 18% लगुला ताहा केते मात्रा प्रभावित कर साधारण चाषीटे केते मात्रा प्रभावित हो ही बड़ इंपैक्ट डाल ये गोटे कथा नुह जो बायो पेस्टिसाइड रोला
जो सार गुड़िक प्रयोग करने जो सार गुड़िक 12% लगुला ता सीधा सड़क 5% को आसीब ये तो बड़ परिवर्तन या तो अपेक्षा थी या ही अपेक्षा करते चाषी मैंने ताहा बड़ परिवर्तन हे एवं बारंबार जो कुहा जाए ना ये जो जीएसटी अनेक समय विरोधी गोटे विरोध अभियोग करती एवं कांग्रेस बारंबार करे गब्बर सिंह टैक्स ना कि देखो ये स्मॉल कार्स बिग सेविंग्स वर्तमान सेमती किछि सिचुएशन जे आपण मु अफोर्डेबल क्लास जी चाहिए गोटे कार किनिया पई जो मानकर इच्छा थिबो आपण किनि परिबा एवं बड़ सेविंग सहित केमती प्रसंजित कहबे बिल्कुल देखंतु साधारण भाव आपण केउ कार्ड व्यवहार करंती पेट्रोल कार्ड व्यवहार करंती डीजल हाइब्रिड कार्ड व्यवहार करंती ये दीटी जाक पेट्रोल और हाइब्रिड कार्ड ऊपर एलपीजी और सीएनजी द्वारा भी जो माने चलुछ देखंतु वर्तमान समय जो मेट्रो सिटीज अछि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलोर समेत अनेक सिटी रे सीएनजी गाड़ी को अधिक परिमाण में व्यवहार करा जाउची एवं पेट्रोल डीजल और हाइब्रिड गाड़ी को जहाँ वर्तमान समय रे BS4 BS6 को आसिलानी तो से कार गुड़ी को वर्तमान समय 28% जो ग्राहक टे किणुला ताकू सीधा सड़क भाव में 10% कम जीएसटी देखिए 18% किणवा पड़ो या आउ बड़ रिलीफ या बड़ कौन हो पारे सुनंदन यही मध्यवित्त परिवार को देखो ये बेसिकली कौन हो गोटे छोट कार जो मैंने किणती स्मॉल कार बड़ कार को आज लग्जरियस ब्रांड कार पाई नुह ये छोट कार किए किणती भारतर पाखापाखि 27 ରୁ 30% लोक किणती अर्थात ये एक बड़ इम्पैक्ट एवं सबू टेलीविजन सेट भी 18% रे बिल्कुल ये जो देखंतु केवल जे सुनंदन टेलीविजन सेट नुहे आपण एसी व्यवहार करूथले आपण कैमरा व्यवहार करूथले ता सहित आपण मॉनिटर प्रोजेक्ट जेगुण व्यवहार करूथले अर्थात कंप्यूटर व्यवहार करूथले डिश वॉशिंग व्यवहार करूथले ये सब गुडी को भी 18% रो 28 जाजिवो मो मन रे सब बेले समस्या रुए मोर निजर अभिज्ञता सुनंदन आपण को कहूची जेतेबेले मु दीपावली आसुतली मु वर्षे अपेक्षा करिया पडुतला मु गोटे वॉशिंग मशीन टे टीवी टे घर को आनिबा पई कारण 28% जीएसटी कहीं किणबी टिके ऑफर आसले किणदेवी एबे से ऑफर को आपको अपेक्षा करबा पड़बनी ये बड़ ऑफर केंद्र सरकार को पक्ष दिया जाइए एवं 28% ରୁ 18% को खसी आसी वॉशिंग मशीन एसी छोट कैमेरा कथा कहतु एवं ता सहित अनेक गुड़िए मॉनिटर प्रोजेक्ट जेगुड़िक रहा ताहा मध्य खसी आसी एवं ये आम आपको ग्राफिक्स माध्यम रे याकू ही दर्शाऊँ सुनंदन केवल ये तो आपण कार कथा कहते खाली बाइक रो गोटे ये आम ऐड करनवा सेतरे प्रसंजित जो कथा को लेकर बाइक को नहीं जो तथ्य आछि बाइक को लेकर 350 सीसी रु जदि आपण अधिका किणुछंती 350 किंवा ताठू कम रे किणुछंती सेथरे परिवर्तन आछि जो 18% रो कथा प्रसंजित कहतले से ठीक से खसी आछि किंतु जदि लग्जरी आइटम को आपण जाउछंती 350 सीसी एबव जाउछंती बड़ बड़ बाइक को जाउछंती ताहाल सेठी बढ़िछि बिल्कुल 350 सीसी हूँ एक बड़ कहीपर सबुठ नेक्स्ट जनरेशन वाला बाइक आम व्यवहार करुचे 100 सीसी 150 सीसी 180 सीसी गाड़ी व्यवहार करें से गाड़ी गुड़िक एक बड़ जीएसटी जिते कमुची ये साधारण भाव में अनेक लोक सहायता करुच्ची सुनंदन एवं जारी रखा आउ कौन कौन तथ्य आसी लगातार भाव में आम टीम आहरी भी रिसर्च करते स्पष्टतार सहित तथ्य रखा जाए पारिबो काहेकि मु प्रथम कहली आपण दर्शक बंधु जे आपणक जीवन मो जीवन प्रसंजित कहते तांको जीवन समस्त जीवन को ये प्रभावित करियो 22 तारीख पर ये बड़ निष्पत्ति सामना को आछि नजर पकेनवा हेडलाइंस ऊपर Headlines is brought to you by Lalchand, trusted brand since 1948. जीएसटी काउंसिल बैठक में बड़ निष्पत्ति आसंता 22 तारीख रु सारा देश में लागू हेबो केवल 5% और 18% जीएसटी स्लैब 12 और 28% स्लैब हटेले सरकार लग्जरी एवं सीन गुड्स पाई नुआ 40% स्लैब क्षीर छेना पनीर सहित पाउरुटी है सस्ता लगे कौन जीएसटी रुटी परोटा भी बाद स्वास्थ्य बीमा भी बढ़ला बाद 33 प्रकार जरूरी मेडिसिन उपर हटिला द्रव्य और सेवा कर आमको टारिफ रे मारुछि भारत सर्वाधिक शुल्क लगाउथबा देश कही भारत को पुणी ट्रम्प को टार्गेट नुआदिल्ली पक्षर जीरो टारिफ डील ऑफर दिया जाइतबा कले दाबी चीन एवं ब्राजिल उपरे भी साधिले निशाना पंजाब रे जल प्रलय 37 जनकर मृत्यु 3.5 लाख प्रभावित होइतबार सूचना भीषण वर्षा पर समस्त 23 जिला को बन्या पीड़ित घोषणा कले मान सरकार 1988 पर पंजाब रे सबुठ भयंकर बन्या चर्चा संबलपुर महानगर निगम निर्वाचन पर फिटिबो कि बाट 2015 प्रकाशित विज्ञप्ति को रद्द कले हाईकोर्ट संरक्षण नियम आधार में 6 सप्ताह भितर सानी निर्वाचन विज्ञप्ति पर निर्देश
धाड़ी दर्शन प्रस्ताव में श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर मोहर व्यवस्थार सुपरिचालना जिलापाल अध्यक्षतार कमिटीर गठन पूर्वतन सीएजी गिरीश मुर्मू अध्यक्षतार प्रथम थर पर गढ़ाला श्रीमंदिर सुरक्षा सब कमिटी। सुनार चमक देखी नीति जड़का ग्राहक आखि आज पुणी सर्वकालीन रेकर्ड स्तर में खांटी सुना 98,000 डेगला 22 क्यारेटर दर। अर्थनीति विशारद मत ट्रंप टैरिफ पागलामी सहित दुर्बल टंका दर वृद्धि बड़ कारण। तो लगातार भाव में शुभेच्छा आसुची प्रधानमंत्री फास्ट पोस्ट भी आम आपको देखलु। एवं सांसद तथा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा पोस्ट सामना आम आपको देखु। बैजयंत पंडा कौन लिखिं बिग स्टेप फॉरवर्ड इन नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's vision. GST Council has approved wide-ranging rate cuts. These reforms will ease daily life for the common man, middle class and MSMEs while boosting growth and empowering small businesses. #GST reforms #GST. ये बैजयंत पंडा पोस्ट आप देखुंत ये हूँ शुभेच्छार कथा। शुभेच्छा ये कारण निष्पत्ति हम बोली पूर्वर गोटे प्रतिश्रुति भी मिलता केबे मिलता 15 तारीख रे मिलता जब प्रधानमंत्री देश को संबोधन करते एवं ता किछि करी भी देखैछंती केंद्र सरकार। एवं बैजयंत पंडा पोस्ट पुणी थे आपण पढ़ी रखुचु आम बिग स्टेप फॉरवर्ड इन नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स गाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's vision. GST Council has approved wide-ranging rate cuts. These reforms will ease daily life for the common man, middle class and MSMEs while boosting growth and empowering small businesses. छोटा ब्रेक नौछु पुणी तमाम तथ्य सहित बहुत जल्दी फिर छोटा ब्रेक। Next brought to you by Arundhati Jewellers. Coming up next brought to you by Arundhati Jewellers ro 5-star promise. Ame acho na? कुछ पॉलिसी बाजार और टर्म लाइफ इंश्योरेंस करने भी जमीती कि मो पर फैमिली को पैसा पे असुविधा होने तू भी कर दे यार एबे तो यंग छे परे देखियो ना कर दे भाई लाइफ रा किछि भरोसा नाही पॉलिसी बाजार रे को टर्म लाइफ इंश्योरेंस खबर आपन को दउछु। जीएसटी हारा कमिटी जीएसटी काउंसिल रे जो बैठक चलथिला हम आपन को सूचना देइथिलु जे किछि गोटे बड़ निष्पत्ति सामना को आसी पारे एवं ता हेछि बड़ निष्पत्ति वर्तमान सामना को आछि। जीएसटी काउंसिल बैठक रु सारा देश रे 5% एवं 18% ये दुईटी स्लैब लागू हेबो। 12 एवं 28% स्लैब को सरकार बंद कर देइछन्ति। केंद्र सरकार के तरफ 12 और 28% स्लैब आज प्राइम टाइम रे भी आम आपको देखैथिलु जे बड़ निष्पत्ति आसवा पय जाउछि। 12 और 28% स्लैब कौन बंद हेबो ए निष्पत्ति वर्तमान समय केंद्र सरकार के तरफ जीएसटी काउंसिल बैठक सामना को आछि। 12 और 28% स्लैब बंद होउछि एवं 5-18% स्लैब ए दुईटी स्लैब 5% और 18% स्लैब लागू ही रहिबो। जहाँ जातीय गणमाध्यम रे वर्तमान समय सूचना सामना को आछि चर्चा होउछि आसंता 22 तारीख रु ये नुआ स्लैब लागू हेबो। पुणी आपनको आम सूचना दउछु आसंता 22 तारीख रु ये नुआ स्लैब लागू हेबो। जीएसटी को नहीं गोटे बड़ परिवर्तन जीएसटी काउंसिल बैठक चलथिला एवं ये बैठक रे किछि बड़ निष्पत्ति बड़ निष्कर्ष प्रस्ताव पूर्व तो रहितिला किंतु कौन 5 और 18% को रखी 12 और 28% स्लैब को केंद्र सरकार बंद करिवे कि याकु नहीं तमाम चर्चा आलोचना भितर वर्तमान समय सामना को आछि बड़ सूचना बड़ निष्पत्ति जहाँ नहीं जातीय गणमाध्यम चर्चा जे 5 और 18% पूर्व 4 स्लैब थिला बे 2 स्लैब विशिष्ट हो 5 और 18% स्लैब लागू हेबो। 12 और 28% स्लैब को केंद्र सरकार बंद करने निष्पत्ति नौछन्ति। ये निष्पत्ति हेछि जीएसटी काउंसिल बैठक रे जहाँ नहीं जातीय गणमाध्यम सूचना वर्तमान समय सामना को आछि एवं बेसी दिन नुहे आसंता 22 तारीख रु ये नुआ स्लैब लागू हो दर्शक बंधु। 5 और 18% ये दुईटी स्लैब रे जीएसटी भरिवे लोक माने एवं बाकी जो दुईटी स्लैब रहितिला जो दुईटी बड़ स्लैब
12% और 28% जो स्लैब थिला ताकू वर्तमान केंद्र सरकार बंद करुछंती। ये सूचना जातीय गणमाध्यम रे वर्तमान सामना को आसुची। पुणी ये बड़ सूचना जहाँ पर पूरा देशर नजर रही जे जीएसटी काउंसिल जो बैठक चलती जो प्रस्ताव गुड़िक पूर्व रही जो थे 2टी स्लैब रखी 2टी को बाद देवाई प्रस्ताव रखा जाता कौन ताहा लागू करा जिवो कि ये तमाम चर्चा आलोचना जारी रही एवं वर्तमान जीएसटी काउंसिल बैठक रू ये बड़ निष्पत्ति सामना को आसुची। सारा देश में 5% और 18% स्लैब जीएसटी रे लागू रहिबो। 12% और 28% पूर्ववत जो स्लैब रही ताकू केंद्र सरकार बंद करुछंती निष्पत्ति वर्तमान समय सामना को आसुची एवं बेसी दिन समय नुहे 22 तारिख रु ये आसंता 22 तारिख रु ये नुआ स्लैब लागू हेबो जहां नहीं जातीय गणमाध्यम रे वर्तमान चर्चा एवं सूचना जहां हस्तगत होउची जे जीएसटी काउंसिल बैठक रे ये बड़ निष्पत्ति सामना को आसीची। 4टी टैक्स स्लैब नुहे एबे 2टी स्लैब रे जीएसटी भरिबे लोक माने एवं मोट ऊपर जे देखबा ताले 12 और 28% Having come in so late, we concluded the meeting and from there we have come here. And let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए। इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए। हमारे MOS कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर शेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रैशनलाइजेशन,
And not only the chair, but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ. There is also, of course, trade facilitation measures and process reform, वो भी इसमें शामिल है, जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud have led to complex documentation, उसको भी simplify करने का, और data analysis वगैरह है. Process reform के ऊपर मैं विस्तार से आपके क्वेश्चन आंसर के समय में जवाब दूंगी. मगर primarily, I'm sure all your interest is to know where is what, which one comes down in rate. उसमें एक just indicate करते हुए I'll stop my input. If Revenue Secretary has anything more he can add. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे. Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें food items बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, sauces है, pasta है, instant noodles है, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, ghee, ये सब 5% में आ रही है. फिर reduction from 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके products के लिए जो वो उपयोग करते हैं, उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही है. Reduction of cement from 28 to 18. क्योंकि घर बनाने में middle class के लिए cement इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3
life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion. That's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste to energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters and systems and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco and chewing tobacco.
Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies. Whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. I think I'll leave it there. We'll answer questions. Thank you, ma'am. Now we move on to the question There's and answer one more. session. Sorry, I'm getting tempted to say one last thing. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods, except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan.